So we are live. We'll just wait for 2 to 3 minutes. So we have like a solid audience of like 10 to 12 people, and then फिर middle में वो join करते रहेंगे. They will keep leaving, so the audience will be keep interacting with you, inshallah. Sure. So I think we should start. We have a solid 8 to 10 people, and looking forward for the session. So I'll just start the session. Thank you so much, Abu Bakr, for joining again. I think you are having a great time with these sessions. So okay, let's start. Assalamu alaikum, everyone. This is Mariam Salman as the host for this uh, session, and I'm from placement team of Institute of Emerging Careers, and I cordially welcome you all participants to have streamed in right now with the Digital Architect Conference 2025 with the Institute of Emerging Careers. This is the first time conference happening on this platform, and according to the first day review, this was an exceptional kind of tech conference happening very first time in Pakistan. We have Mr. Fahad Khan over here and Miss Laiba Noor. Let me just go through a small introduction about both of them. We have Miss Laiba. She will be co-host for this meeting. Laiba, would you like to introduce them to you?
Yeah, sure. Thank you so much, Miriam. So, hi everybody. This is Laiba Noor, and currently I'm a student of the bachelor student in my last year, and also I'm an ambassador here for the Digital Architect Conference, and I'm super excited to be a part of this amazing conference, and super excited for the session as well as the topic is very interesting. So, looking forward to see you all here. Thank you, Miriam. So thank you so much, Laiba. So the session has title as "The Hidden Chapter of Moving Abroad: What to Be Careful About" by Mr. Fahad Khan. He is himself living in Australia and had the experience of training students a bundle of times. And we had a session with him already. We had a great time. This could be the masterpiece session. He explains so much in detail. So make sure you guys have your pens and notebooks with you guys. Over to you. The floor is open, Mr. Fahad. Thank you so much, Mariam, for the nice introduction. And thank you to Institute of Emerging Careers for inviting me in this conference. And thank you for hosting the session, Mariam and Laiba. So today we'll be talking about the hidden chapter of moving abroad, what to be careful about. So um, हर चीज के साथ जो भी आप लाइफ में करते हो कुछ ना कुछ एसोसिएटेड चैलेंजेस होते हैं. So moving abroad is one of them as well. When you come here, uh, you are completely in a new world. और उस मूवमेंट के साथ या उस माइग्रेशन के साथ कुछ चैलेंजेस एसोसिएटेड होते हैं जिनको आपको टैकल करना होता है जो आप प्रीवियसली एज्यूम प्रिज्यूम नहीं कर पाते क्योंकि आप उस एटमॉस्फेयर में आए नहीं होते पहले. बट देयर इज अ कंप्लीट शिफ्ट ऑफ सिस्टम, कंप्लीट शिफ्ट ऑफ लाइफस्टाइल और उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो आपको मल्टीटास्किंग करके उन सब चीज़ों को बैलेंस आउट करके मैनेज करना होता है. So we'll be talking in detail about what are the challenges associated with moving abroad and particularly in terms of scholarships. बहुत सारी myths हैं इन चीज़ों से related जो हम आज break करने की कोशिश करेंगे. Meanwhile, during the session, if you have any questions or comments, feel free to comment in the chat. And I would request the host to please stop me and share any comments or questions if the audience have. So regarding this session, why am I relevant? Yeah. So I have secured four fully funded PhD scholarships across China, Poland, Ireland, and Australia. So I have a diverse experience of applying in different regions of the world and for different fully funded scholarships. So I am pretty much familiar with all the systems and all the requirements of different regions across the globe. So I have been guiding students as well regarding fully funded scholarships in particular because I'm a huge fan of fully funded scholarships because it does not only help the bright students in getting higher study opportunities but also help their families and to get financially stable. Uh, and through them, they are able to help their families and the people who are attached with them in their home countries. So, fully funded scholarships are really good way to kickstart your career. Uh, I have a huge experience of publications with more than 1100 citations. Right now, I'm doing my PhD in Australia at University of Tasmania. So it's ongoing. It's my third year of my PhD. I did my IELTS and got 7.5 bands. We'll talk about how to prepare for IELTS and the myths associated with IELTS as well. I had a distinction in masters, though it doesn't matter a lot. But just to mention, I have a 7+ years of experience of guiding students voluntarily regarding fully funded scholarships and scientific writing. And I'm also a scientific content creator, public speaker, and a YouTuber. So, in today's session, what we are going to discuss first, we will try to understand the concept of global village. So people say that the world is now a global village. So we'll try to understand this concept कि किस तरह से हम दुनिया को एक global village consider करते हैं and how we can expand our vision from being where we are to at the global level.
And then we'll try to break the myths that are associated with studying abroad and scholarships in particular. And then we'll talk about the bigger picture, how your one goal is just first step of another story. So हमें लगता है कि मूविंग अब्रॉड का जो गोल है हमारा, वो अगर अचीव हो गया तो सब कुछ लाइफ में सॉर्टेड है और सब कुछ ठीक हो जाए और सब मजेदार होगा. बट व्हेन यू एक्चुअली गेट इनटू दिस वर्ल्ड, तो वहां से आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है. सो इट्स जस्ट द फर्स्ट स्टेप ऑफ the other journey you are going to start. Then we'll talk about the master plan, how to get an opportunity abroad in terms of study or in terms of job or something. So let's talk about world is a global village. एक्चुअली होता क्या है कि हमने सारी लाइफ एक जगह पे स्पेंड की होती है अपने होम कंट्री में, तो हम चीज़ों को उसी पर्सपेक्टिव में देख रहे होते हैं जो ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस होता है. एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, जिस जो आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये उसकी समरी है. सो जस्ट assume that all these persons who are standing here are blind and they are just judging uh, कि जो उनके करीब चीज है वो क्या चीज है. So if someone is sitting on the elephant, he would be getting the air out of the breathing process of elephant. So he judged that it's a fan. The person who is standing on the stairs is saying that it's a wall because he can only touch and see that there is a strong wall ahead of him. So he's judging the elephant as a wall. Similarly, the person who is touching the tail of the elephant is saying that it's a rope. And the female who is touching the legs of the elephant, she is saying it's a tree. So all of them are blindfolded and they are just feeling what they are touching and they are judging what they are actually touching. So all of them are wrong. So in the same way, जब हमारा एक्सपोजर ज्यादा नहीं होता, तो जितना एक्सपोजर होता है, जितने सर्कल में आप चीजें देख रहे होते हो, आपका पर्सपेक्टिव उसी तरह से होता है. जब आप उस सर्कल को ब्रॉड करते हो, उस सर्कल से बाहर निकल के बड़े सर्कल में बिगर पिक्चर में चीजों को देखते हो, तो पर्सपेक्टिव टोटली चेंज हो जाता है. बहुत सारी रियलिटीज आपके सामने आती हैं, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स जो आप फॉलो करते आ रहे होते हैं, उनको आप चैलेंज करते हो, वो ब्रेक करते हो और नए बिलीफ्स डेवलप करते हो. सो इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव, हाउ यू आर सीइंग थिंग्स. तो अपनी एक्सप्लोरेशन का जो दायरा है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है हमें. यू वॉन्ट नो टिल यू एक्सप्लोर. सो जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस नहीं लोगे, तब तक आपका पर्सपेक्टिव बहुत लिमिटेड होगा. सो ग्लोबलाइज योर विजन. बहुत सारे लोग रोना रोते हैं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है पाकिस्तान में. सो पाकिस्तान से बाहर भी एक दुनिया है जिसको आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज नाउ. हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हैं. यू अपलोड अ वीडियो जो मिलियंस ऑफ लोग देख रहे होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड. लैंग्वेज बैरियर कम से कम है because everybody almost can speak English, understand English, so you can communicate with anybody across the globe. So ग्लोबलाइज करें अपनी अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए. डोंट stick with your within your city, within your region, within your country. Come out of it and see the things in a global vision. See opportunities in every challenge. इसके हवाले से एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको कि एक दो शू मेकिंग कंपनीज थी. उन्होंने अपने सेल्स मैनेजर को एक कंट्री में भेजा जो कि अफ्रीका में था, और उनको कहा कि वो मार्केट सर्वे करके आए और उनको बताएं कि वहाँ उनकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या हैं. सो वो दोनों वहाँ पे गए उस कंट्री में, और वहाँ जब लैंड किया तो जो नेगेटिव थिंकर था उसने देखा कि लोगों के पाँव में शूज ही नहीं थे. वहाँ पे लोग नंगे पाँव घूम रहे थे. सो ही कॉल्ड राइट अवे हिज कंपनी एंड सेड कि यहाँ पे हमारा बिजनेस नहीं चल सकता क्योंकि यहाँ पे लोग जूते नहीं पहनते. द अदर सेल्स मैनेजर हु वाज अ पॉजिटिव थिंकर, वो जब वहां पे पहुंचा उसने देखा लोग यहाँ पे लोगों के पाँव में शूज नहीं है.
तो उसने अपनी कंपनी को कॉल किया और कहा कि वी हैव अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी हियर, क्योंकि यहाँ अभी लोगों ने जूते पहनना स्टार्ट ही नहीं किया। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू सी योर challenges एज एन अपॉर्चुनिटी। सो अगर आप उसी चीज को अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो आपके लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी बन गई है। और अगर आप उसी को एज अ चैलेंज देख रहे होगे और उसी सर्कल में स्टक रहोगे तो वो आपको चैलेंजिंग इतनी लगना शुरू हो जाएगी कि आप कहोगे कि ये तो इम्पॉसिबल है करना। चैलेंज द ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड एक और स्टोरी आपको सुनाता हूँ एलिफेंट की। जब एलिफेंट छोटा सा होता है तो उसके पाँव में एक जंजीर बांध दी जाती है, जो सर्कस का एलिफेंट होता है उसे कंट्रोल करने के लिए। सो वो जब छोटा होता है तो उसमें पावर कम होती है, ही ट्राई टू गेट रिड ऑफ दैट रोप और whatever, बट वो उससे छुड़वा नहीं पाता खुद को, क्योंकि उसमें पावर अभी कम होती है, वो बहुत छोटे साइज का होता है। he keeps on trying but fails every time। तो विद टाइम उसका एक माइंडसेट बन जाता है कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता। सो विद टाइम जब वो एलिफेंट बड़ा होता है और एक ह्यूज एनिमल में कन्वर्ट हो जाता है, अब उसके पास इतनी पावर है कि वो एक झटके में उसको तोड़ सकता है। बट उसका माइंडसेट डेवलप हो चुका है, उसे ये बिलीव हो चुका है कि अब वो उस जंजीर को नहीं तोड़ सकता। सो वो ट्राई करना ही छोड़ देता है और वो उसी छोटी सी जंजीर के साथ बंधा रहता है रेस्ट ऑफ द लाइफ। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अडेप्ट नहीं करते चीज़ों के साथ। सो आपका माइंडसेट उसी अंदाज से बना होता है जो जिस जगह पे आप रहे होते हो, जिन लोगों में आप रहे होते हो, जिस थॉट प्रोसेस पे आपने बिलीव किया होता है। बट विद टाइम चीज़ें बदलती हैं और आपको अडेप्ट करना होता है और चेंज होना होता है। यू बिकम मोर पावरफुल, यू बिकम मोर अवेयर। सो उस अवेयरनेस को, उस पावर को यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है विद टाइम। Trust the process. Everything takes time, and if you follow the right process, you will reach the right destination. So it is very important कि आप process को trust करें. Good things always take time. So with time आपने small goals अपने set करने हैं और हर goal को achieve करके खुद को ज़्यादा empowered feel करवाना है, उस winning को celebrate करना है, उस small achievement को celebrate करना है। सो जब आप इन स्मॉल अचीवमेंट्स को स्टैक अप करते जाओगे तो यू विल अल्टीमेटली गेट द बिगर गोल। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भी चीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, यू कांट रैंडमली गेट समथिंग आउट ऑफ समथिंग। So you need to prepare, you need to plan, you need to do your homework. So अपने आप को चीज़ों के लिए प्रिपेयर करें जो आपके गोल्स हैं। If moving abroad is one of your goals, so आपको पता होना चाहिए कि आप किस ट्रैक से किस कंट्री तक पहुंचेंगे और कैसे पहुंचेंगे, आपके करियर पाथ क्या होगा, आपकी एजुकेशनल जर्नी क्या होगी, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जिनको आपने आज से मीट करने की कोशिश करनी है, वो क्या प्रोफाइल है जो आपको बनाने की जरूरत है टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आप एम कर रहे हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप कितना डिजर्व करते हो, क्या डिजर्व करते हो और क्या डिजायर करते हो। अगर इसमें गैप बहुत ज्यादा होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू मीट दैट गैप और आप अल्टीमेटली डिप्रेस हो जाओगे। लेकिन अगर आपने सेल्फ जो है असेसमेंट की होगी और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर रहे होगे, उसके अकॉर्डिंग आपने प्लान किया होगा, एफर्ट्स की होंगी, तो यू विल डेफिनेटली गेट योर गोल। गुड थिंग्स टेक टाइम। कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता, स्पेशली सक्सेस। सो सक्सेस टेक्स टाइम। उन्हीं लोगों को मिलती है जो कंसिस्टेंसी शो करते हैं और ऑन ट्रैक रहते हैं। सो एज इट सेज के भाग सकते हो तो भागो, उड़ सकते हो तो उड़ो, चल सकते हो तो चलो, रेंग सकते हो तो रेंगो, बट कीप ऑन द ट्रैक। सो अगर आप स्लो स्पीड में भी मूव करते रहोगे तो यू विल रीच योर गोल। So firstly, we'll try to break some myths associated with studying abroad or particularly scholarships. Myth number one is that only high achievers go abroad for higher studies. This is the myth which is very common among the students. उनको लगता है कि बाहर की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए या स्कॉलरशिप विन करने के लिए आपको गोल्ड मेडलिस्ट होना ज़रूरी है या बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स होना ज़रूरी हैं, अदरवाइज आप अब्रॉड नहीं जा सकते।
Things are totally different in countries other than Pakistan when you come out of Pakistan. तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत डिफरेंट होता है और वो आपको डिफरेंटली इवेलुएट करता है. सो हम क्योंकि उसी competitive एकेडमिक सिस्टम का हिस्सा है जिसमें फर्स्ट आ जाता है और अगर सेकंड आ गए तो वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है घर में. सो उस competitive सिस्टम से जब हम बाहर निकलते हैं और ग्लोबल वर्ल्ड में देखते हैं तो एजुकेशन सिस्टम बहुत डिफरेंट है यहाँ पे. यहाँ पे आपको असेस किया जाता है, यहाँ पे आपको जज नहीं किया जाता ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड्स. सो इवन इन द स्कूल लाइफ यहाँ पे बच्चों में कोई पोजीशंस नहीं अनाउंस की जाती जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पाकिस्तान में की जाती हैं. जस्ट उनको असेसमेंट पास करनी होती है विच आर मोस्टली असाइनमेंट बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड, जो कि उनकी लर्निंग को असेस करती है कि उन्होंने कितना लर्न किया आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर ऑफ कोर्स वर्क. और उसके बाद उन्हें ग्रेजुएट किया जाता है, डिग्री अवार्ड की जाती है. सो हमें लग रहा होता है कि हम जब तक बहुत ज़्यादा हाई अचीवर्स नहीं होंगे हम स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते या हायर स्टडीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. CGPA इज़ वन ऑफ द मिथ्स. सब स्टूडेंट्स को लगता है कि CGPA बहुत ज़्यादा होगी, 4/4 CGPA के पीछे भागने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है. सो दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड. If you have a moderately good uh, academic profile and grades, especially in those subjects in which you want to pursue your higher studies, so you can apply anywhere in the world for scholarships as well as for admissions. और ये आप खुद कर सकते हो, आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है. आइल्स इज अनदर मिथ कि आइल्स का स्कोर बहुत अच्छा होगा तभी आप स्कॉलरशिप विन करोगे. ऐसा कुछ नहीं है. आइल्स के बगैर भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं. एंड इफ यू आर टारगेटिंग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज तो भी आपको आइल्स जो है वो जस्ट ये टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है कि यू कैन यूज इंग्लिश लैंग्वेज इनटू योर डे टू डे एक्टिविटीज. आप सुन सकते हो, समझ सकते हो, बोल सकते हो इंग्लिश को. So if you have done your university education, all of your school education is in English, your college education is in English, you have done the university degree in English subjects. So पाकिस्तान में जितने subjects English में होते हैं बाकी countries non English speaking countries में नहीं होते उतने. And if we compare being in an English speaking country, अगर हम बाकी nationalities के साथ compare करें तो पाकिस्तानी speak really well, they understand English really well. So हमें क्योंकि बचपन से ट्रेन किया जाता है इंग्लिश के हवाले से तो there is nothing to worry about IELTS or any other English proficiency test. You can surely pass those tests. बैंक स्टेटमेंट्स स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तभी वो अब्रॉड मूव कर सकते हैं. So there are a lot of opportunities. There are different categories of scholarships. अगर आपका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा competitive नहीं भी है तो you can change the region, you can change the countries you are applying in, you can change the scholarships you are applying in. Uh, so everything can be sorted based on your profile. You just need to do your homework. So what is a good academic profile? So if we are talking about a profile, आइडियल होना नहीं ज़रूरी बट गुड होना ज़रूरी है. सो एक गुड एकेडमिक प्रोफाइल अगर आप अभी इस जर्नी के स्टार्ट में हैं या ऑन गोइंग हैं तो आप अपने प्रोफाइल में क्या चीज़ें ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं दैट कैन हेल्प यू टू get an opportunity abroad. So the primary things you would focus on is your CGPA. CGPA is not the only criteria for getting a scholarship or admission abroad, but it is one of the criteria and one of the important criteria because some scholarships have a threshold कि मिनिमम थ्रेशोल्ड सेट हो सकता है कि इतनी CGPA से ऊपर वाले अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए. या कहीं पे एडमिशन के लिए एक थ्रेशोल्ड सेट हो सकता है. इन दैट केस यू नीड टू पास दैट थ्रेशोल्ड इन ऑर्डर टू अप्लाई इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. सो यहाँ पे CGPA इम्पोर्टेंट हो सकती है. Then comes your admission test. Different subject areas के लिए different tests require किए जा सकते हैं. GRE is one of them if you are particularly applying in USA. GMAT is also required in USA for medical subjects. LSAT is for law related subjects in US.
IELTS is an English proficiency test. TOEFL is again an English proficiency test. IELTS is acceptable throughout the world. TOEFL is particularly more acceptable in the US region and Canada and Saudi Arabia, but they both can be used alternatively. HAT is the test if you are applying for HEC based foreign scholarships, then you would need to pass HAT. Research projects, if your degree is research related, it would be good to do some research project, research work, get your thesis done and get your research work published. That will help you improve your profile. अगर आप अभी beginning में हो अपने research career के like bachelor's or master's, try to collaborate with your seniors, with the teachers, professors who are around you, and try to participate in their research work and try to contribute in that. Portfolio, if you are into arts and creativity related subjects, then you will develop your portfolio. SOP and LOR are a statement of purpose and letter of recommendations. So these are the documents that you would require to apply for scholarship. Um, Letter of recommendations are taken from your previous employer or from your previous supervisor. Uh, these are the letters in which they recommend you for a particular scholarship or to get admission in a particular institute. सेकेंडरी कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं जो enhance करते हैं आपके प्रोफाइल को? Relevant work experience. If you get a chance और अगर आप स्पेशली ब्रेक ले रहे हो अपनी ग्रेजुएशन के बाद, gap period ले रहे हो like 6 months or 1 year, try to get a relevant job and get work experience. If you are a fresher, like with no study gaps, then you should utilize your summer breaks for getting internships. If you are into business related subjects, then try to get some entrepreneurship related projects. You can do online courses. All the high ranked universities in the world are offering free online courses. You can do those courses, but make sure these courses are relevant to your subject or your research area, and don't just randomly get the certificates. So stacking of certificates is not important. Acquiring the right skills is important, and the relevant ones as well. वॉलंटियरिंग बहुत अंडररेटेड एक्टिविटी है जो स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं यूजुअली, क्योंकि आपको फॉर द टाइम बीइंग उसका कोई आउटकम नजर नहीं आ रहा होता कि आप क्यों फ्री में किसी के लिए काम करोगे, बट दिस इज समथिंग विच इज रियली वेल एक्नॉलेज्ड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. सो अगर आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कंट्रीब्यूट करते हो और की पोजीशंस पे कंट्रीब्यूट करते हो, आपके मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, so this is something that is really acknowledged here. Extracurricular activities. Make sure कि आपकी university life में you are part of some of the societies that you like. Do some of the extracurricular activities that you like to do, and try to win something, try to serve in important positions in those societies. इससे आपके लीडरशिप स्किल्स इन्हांस होते हैं. बहुत सारे स्कॉलरशिप्स ऐसे हैं जिसमें वो आपकी लीडरशिप स्किल्स को और मैनेजमेंट स्किल्स को वेटेज देते हैं. Awards etc. Participate in the competitions like in the conferences, um, give the poster presentation or participate or give a talk in some conference or something and get some important awards out of it. So these things or components of the profile may vary according to the subject you are studying, and IELTS and TOEFL sometimes are only the cutoffs. So it means that basically IELTS or TOEFL sometimes सिर्फ आपकी वीजा रिक्वायरमेंट हो सकते हैं. It has nothing to do with the scholarship, but ultimately आपको वो करना पड़ेगा क्योंकि you need to get the visa after getting a scholarship. So So myth two is IELTS is a genie. Students बहुत ज़्यादा डरते हैं IELTS attempt करने से, but in fact IELTS can 10x multiply your opportunity for studying abroad or scholarships. So एक स्टूडेंट जिसने IELTS नहीं दिया उसके पास इतनी opportunities हैं जिसने IELTS दिया है.
उसके पास 10x 10 टाइम्स ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज, ज़्यादा स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी होगी. एंड IELTS कैन हेल्प यू गेट इनटू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज. सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जहाँ आप फील कर सकते हो बीइंग अ पाकिस्तानी स्टूडेंट वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट समथिंग दैट यू आर नॉट फेमिलियर विद. सो इंग्लिश हम पाकिस्तान में भी बहुत डे टू डे एक्टिविटीज में यूज करते हैं. सो इफ यू मूव इनटू अ कंट्री दैट इज इंग्लिश स्पीकिंग तो वो लैंग्वेज बैरियर वाला जो एक इशू है वो खत्म हो जाता है. इफ यू मूव इनटू अ कंट्री दैट इज नॉट इंग्लिश स्पीकिंग तो एक लैंग्वेज बैरियर हमेशा रहता है. इट्स हार्ड टू गेट इनटू द कम्युनिकेशन विद द लोकल पीपल. आइल्स प्रिपेयर करने के लिए आपको किसी एकेडमी जाने की जरूरत नहीं है. यू कैन डू द सेल्फ प्रिपरेशन. You can use YouTube. I use these three resources. The first is the YouTube channel called E2IELTS, which is run by the native English speakers. Second is a website called IELTS List. All of these three resources are free and you can do the preparation yourself. And the third one is IELTS online test, where you can find the actual IELTS test which you can practice. और ये mock test देने के बाद आपको score भी मिल जाता है अपना. So this website is really helpful. So you just need these three resources to prepare for IELTS. I just prepared for a week and got 7.5 bands, which were enough to apply for any scholarship. Myth 3, research proposal is a must. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर आप एमफिल या पीएचडी, एमएस, मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यू नीड टू प्रिपेयर अ रिसर्च प्रपोजल फर्स्ट और फिर आप ईमेल्स करना शुरू करोगे या अप्लाई करना शुरू करोगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट अ मिथ. यू शुड नो कि कब रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करना है, कैसे करना है और क्यों करना है. So basically, research proposal आप तब prepare करते हो when you get a positive response from a professor who is ready to take you as a student. When you get a potential supervisor, तब आप उससे communicate करके उसके project के बारे में, available project के बारे में पूछते हो, उससे information लेते हो. जो वो चाहता है वो जानने की कोशिश करते हो, and then you start making a research proposal. और फिर वो उसी के साथ कम्युनिकेशन रखते हुए, उसके इनपुट लेते हुए आप रिसर्च प्रपोजल डेवलप करते हो. देन यू सबमिट दैट प्रपोजल टू द यूनिवर्सिटी. So you can't randomly just prepare research proposal for every other professor and just to email him or just to apply for the scholarship. So you should know कि आपको research proposal कब बनाना है और कैसे बनाना है. So one formula that I always teach students to prepare a research proposal is polymorph. So T for title, get an attractive title for your research proposal, then write the introduction. Introduction should include references, citations from the latest journal articles that are published in your research area. Then you find the problem statement. प्रॉब्लम क्या है इस रिसर्च एरिया में, कहाँ पे लूप होल है जो आप फिल करोगे अपनी रिसर्च के थ्रू. देन यू राइट द ऑब्जेक्टिव्स के आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे. देन यू डू द लिटरेचर रिव्यू के जो आप प्लान दे रहे हो उस पे अब तक क्या काम हो चुका है, लेटेस्ट स्टडीज में उस पे क्या काम हुआ है, कौन सी मेथडोलॉजीज यूज हुई हैं और आप क्या मेथडोलॉजी यूज करते हो करोगे. Then you suggest a methodology to do your research, and finally you write the research outcomes के possible outcomes क्या होंगे if everything goes right. Myth 4 is that my agent will win a scholarship for me. Nobody is going to win a scholarship for you. और जो scholarship agents या educational consultants हैं market में, their qualification is even less than the students who are applying for scholarship or admissions abroad. So you understand your profile better than your agent. Try to take your remote control in your own hand. Know your worth. Take informed decisions. आपको पता होना चाहिए कि क्या काम आप खुद से कर सकते हो और कहाँ पे आपको किसी की सर्विसेज या हेल्प लेने की जरूरत है. Do your homework. Try to learn everything yourself first.
YouTube is a very good resource. Everything is available, and you can apply for visas yourself. You can apply for admissions. You can apply for scholarships. There are a lot of people around you on social media and YouTube who can help you out how to do things. So you do not need to spend money for everything. You are qualified enough to do your own job. Myth number five, templates create perfect documents. So students are always in search of the perfect templates to create their CVs, email, or cover letters. This is a myth because everybody's story is different, and you need to learn how to write your own story. I'll just give an example of my own CV. When I was applying for my PhD, my CV was like 6 pages long. Uh, my professors and teachers used to say me कि बहुत लंबा CV है, एक fresher student का इतना लंबा CV नहीं होता, ये तो professors का इतना लंबा CV होता है. But I had done enough of the things that I wanted to mention in my CV, और जब वो सारी चीजें मैंने ऐड की तो it became a long CV. बट वो सारी चीजें जस्टिफाइड थी और उनमें से कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं था जो मैं निकाल सकता. So my CV was 6 pages long and I won a scholarship with that CV. Usually लोग कहते हैं आपका CV 2 pages से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए. So things can vary according to the person, according to your own story. So you need to uh, make your documents according to your profile. अपनी ईमेल खुद लिखना सीखें. उसमें एक नेचुरल टोन आनी चाहिए. आजकल एआई का यूज करके स्टूडेंट्स बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं. आई कैन टेल इन अ ग्लिम्स के कौन सा डॉक्यूमेंट एआई रिटर्न है और कौन सा स्टूडेंट ने खुद लिखा है. So if you are little bit familiar with the artificial intelligence, you can right away tell कि ईमेल खुद से लिखी गई है या आपने कोई टूल यूज करके लिखी है. So be natural, write your own things, write, rewrite, and improve. So this is important. Students usually do not know the difference between CV and resume. This is very important. अगर आपसे resume मांगा जाए, you need to provide resume. अगर आपसे CV मांगा जाए, तो you need to provide CV. Resume is a concise 1 to 2 page document, a brief and targeted list of skills and achievements. Generally used for job applications in fair or internship. Education is mentioned after work experience. So resume is more work oriented, job oriented. ज़्यादा आपके skills पे focus करेगा, आपके work experience पे focus करेगा, then comes your education. Whereas CV is more academic document, ज़्यादा comprehensive होता है. Its length is pretty flexible. Short भी हो सकता है, long भी हो सकता है CV. और CV में आपकी एजुकेशन प्रायोरिटी होती है, so education will come first and work experience will come next. और जो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड होगा या रिकॉर्ड होगा वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा होगा. मीन्स कि जो चीज़ आपने रिसेंट की है वो टॉप पे आएगी, उसके बाद उससे पुरानी, उसके बाद उससे पुरानी. इसी तरह से वर्क एक्सपीरियंस में, इसी तरह से सर्टिफिकेशन में, इसी तरह से बाकी सारे अदर कंपोनेंट्स ऑफ योर सीवी ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगे. रिसेंट चीज टॉप पे आएगी, उसके बाद पुरानी, उसके बाद उससे पुरानी. Used for academic positions, advanced research, and fellowship, education is mentioned at the top, and then comes your work experience. So, resume is a short document, more work oriented, and CV is a comprehensive document, more academic. Myth number six, certificates will impress. Certificates are not going to impress anybody if they are not relevant. So, I always tell students that there are categories of certificates. You can categorize your certificates into category A, B, and C. Category A certificates will be those that represent a skill, a new skill that you have learned. Like if you have learned data science, you have learned a programming language, you have done a um, lab-based skill, कोई टेक्निक सीखी आपने और उसका सर्टिफिकेट लिया है. सो दैट वुड बी कैटेगरी ए सर्टिफिकेट जो आपकी फील्ड से रेलेवेंट होगा और आपने कोई नया स्किल लर्न किया होगा उसके थ्रू. कैटेगरी बी सर्टिफिकेट वुड बी अगर आपने किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है एज एन ऑर्गेनाइजर, कोई पोस्टर कंपटीशन विन किया है, कोई क्विज कंपटीशन विन किया है, समथिंग रेलेवेंट टू योर फील्ड and something that represents your competence regarding that particular domain.
कैटेगरी सी सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि ऑर्गेनाइजेशंस भर भर के सर्टिफिकेट्स देती हैं पार्टिसिपेंट्स को कि यू पार्टिसिपेटेड इन अ ट्विटर कैंपेन तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिल रहा है. This certificate is worthless. It has nothing to do with your actual academic profile. It does not represent any skill. It does not represent your competence. As a participant, अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेट लिया है तो participation is not proving anything. So make sure कि आप अपने प्रोफाइल में जो सर्टिफिकेट्स ऐड कर रहे हो, अगर आपके पास ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हैं, so you need to know कि आपको कौन से सर्टिफिकेट सीवी में इंक्लूड करने हैं. सिर्फ वो सर्टिफिकेट्स इंक्लूड करने हैं जो रेलेवेंट टू प्रोफाइल होंगे, रेलेवेंट टू पोजीशन होंगे जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो. अदरवाइज योर सर्टिफिकेट्स आर नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. Myth number 7, one set of documents works everywhere. So I see people who have prepared their CVs 3 years ago and they are using the same CV for applying for scholarships now. They have the reference letters that are 2, 3 years old, and they are using the same reference letters which are dated back in 2020 or 2022. This shows that you are not committed to applying for admission or scholarship. So you need to update your documents every time you are applying for new admission or new scholarship. Letter of motivation is again a document that need to be tailored according to the opportunities you are applying in. So उसमें आप उसी opportunity के requirements के हिसाब से उस letter को modify करोगे and then use that document. So एक set of documents हर scholarship हर admission के लिए काम नहीं करेगा. You need to revise your documents, update your documents with time. Myth number 8, I'm born with a silver spoon. I'm daddy's princess or prince. I'm not going to work unless I get my desired job or high paying job. So पाकिस्तान में रहते हुए आपको अपनी desired job तक पहुंचना is a pretty impossible task. सो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं अपनी स्टडी लाइफ के बीच में कोई वर्क अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश नहीं करते, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में 14 साल 15 साल के बच्चे जो हैं वो साथ में साइड हसल स्टार्ट कर देते हैं, कैजुअल जॉब स्टार्ट कर देते हैं. दो हमारी मार्केट में कैजुअल जॉब्स का ट्रेंड भी नहीं है, बट स्टिल इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग even if it is low paid and relevant to your field, always grab that opportunity and do that and grab that experience. Because जब आप scholarship में apply करते हो तो relevant work experience बहुत count करता है. Similarly, if you get a scholarship and you get abroad, तो अगर आप permanent residency के लिए apply करना चाहते हो, then your relevant work experience counts a lot. So work experience if relevant, that this is very important. अगर आपको कम सैलरी में भी relevant work experience मिल रहा है, do get that opportunity, especially if you are planning to take a gap after your studies. अगर नहीं तो फिर internships जरूर करें, अपनी summer breaks को utilize करें. साइड हसल कुछ ना कुछ साइड हसल करने की कोशिश करें to meet your finances. You can do something online, and this institute is teaching preparing students for this purpose. So this is very important कि आप self sufficient हों, financially independent हों as quickly as possible. Myth number 9, I have a perfect profile. So people think that if they have completed their degree, they cannot change anything. But the reality is that with time, you can learn, adapt, and improve. So it's always a time-taking process to get admission or scholarship. So in that time as well, you can always add new things in your profile and try to improve your profile with time. Don't just use the same profile and keep applying for 2, 3 years and then say that you don't get any opportunity. You need to utilize that time when you are getting rejections, when you are being failed. You need to learn and adapt and improve and see around कि जो लोग win कर रहे हैं उनके profiles में ऐसा क्या है जो आपके profile में नहीं है. Work on that. It takes 3 to 6 months to get that thing in your profile, and then you will be on the same level as the other winners. So it is important to learn your mistakes and improve as you go. Myth number 10, I'm not responsible. Other people are responsible for the outcome I'm getting.
So sometimes there are ego issues. People do not approach people for help, and they are bothered by the fact that they need to reach out to someone who knows. So it is important to utilize every person in your network who can help you out with things, and make sure before approaching for help you have done your own homework. आपको पता होना चाहिए कि आप किसको अप्रोच कर रहे हो और क्यों अप्रोच कर रहे हो और आपका क्वेश्चन क्या है. So there are many students who message me on LinkedIn and WhatsApp and say that we want to win a fully funded scholarship. This is not a question. If you want to win a fully funded scholarship, you should do your homework. You should try to find out which scholarships are suitable according to your profile. And then, if you face any confusion, if you have any questions, if you have any queries, then reach out to the person who can help you to resolve that question. But if you just randomly reach out to people and say कि मुझे scholarship win करना है, so nobody has time to tell you the whole story and guide you from step A to step Z, that how you will win a fully funded scholarship. So it is important कि आप अपना homework करके फिर लोगों को approach करो and then utilize every person in your network. Take charge on your remote control in your own hand and know your destiny. So after all this struggle, आप abroad पहुंच जाते हो और फिर यहाँ से एक नई जर्नी स्टार्ट होती है. सो जब आप पहुंच जाते हो तो यू रियलाइज कि योर गोल इज जस्ट अनदर स्टेप. सो पहले आपको लग रहा होता है कि इफ यू अचीव दिस तो सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, सब कुछ कोई चैलेंज नहीं रहेगा और सब सॉर्टेड है. बट जब आप लैंड करते हो यहाँ पे तो यू रियलाइज कि दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप टू अनदर बिगर जर्नी. सो एक बिगर पिक्चर स्टार्ट होती है और उसके अपने चैलेंजेस होते हैं. सो गेट रेडी टू बी बॉर्न अगेन. नो द सिस्टम. अब्रॉड मूव करना ऐसा ही है जैसे आप दोबारा पैदा हो गए. सो यू आर बॉर्न इन अ डिफरेंट प्लेस, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता. उनका सिस्टम कैसे चलता है, उनका कल्चर क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है. यू डोंट नो एनीथिंग. उनके नॉर्म्स क्या हैं, उनके ट्रेडिशंस क्या हैं, आपको कुछ भी नहीं पता होता. सो यू नीड टू लर्न everything from zero. So be ready for that situation. और जितना ज़्यादा आप उस जगह के बारे में पहले से जान के आओगे उतना easy feel करोगे. Try to approach the people who are already living there. Pakistani community is bit less connected in comparison to other countries, in foreign countries. But it is always good to approach people who are already living here, to know कि आपको किन चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो के आना है पाकिस्तान से, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए. That will help you to adapt quickly in the new environment. Cultural shock is very real. जब आप abroad move करते हो तो you realize कि you feel really lonely. uh, it's hard to adapt to the new system. बहुत सारी चीजें आपको एक साथ करनी होती हैं. Like you need to focus on your studies. Then you need to manage your finances. खाना आपको खुद बनाना होता है. You need to find the residence. You need to sort out how you are going to travel to your workplace or back to your residence. Sometimes आपको starting में residence नहीं मिल रही होती और आपको बहुत दूर residence मिलती है. So in that case, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पाकिस्तान से आते हुए आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिया, so that will become a big problem for you. और यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड में जॉब लेने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे बच्चों को 16 ईयर्स के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एंड बाय 18 दे हैव द फुल ड्राइविंग लाइसेंस. और अगर आप यहाँ आने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस शुरू करते हो तो इट टेक्स यू 3 years टू गेट द लाइसेंस. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया फॉर नाउ. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पहले से पता हो कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और सेटल होने के लिए आपको क्विकली सेटल होने के लिए पाकिस्तान से क्या चीज़ें आप ला सकते हो. So it is very easy to get a driving license in Pakistan, but it is very difficult to get one here. So if you get a license in Pakistan and convert it into an international license, you can come here right away, convert your license to the local license.
and then you can drive the vehicle. So वो वाली चीजें sort करने में आपको help मिल सकती है. इसी तरह language barrier, if you are moving to a non-English speaking country, even in the English speaking country, accent is a very uh, difficult thing to understand. So Aussies का accent बहुत different होता है. Irish जो accent बोलते हैं वो English speakers को भी समझ नहीं आता. So it takes time to adapt to the particular accent of language that you are speaking. और अगर आप नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जा रहे हो तो यू शुड हैव अ माइंड सेट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज. जैसे अगर आप चाइना में हो तो चाइना में अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है तो लैंग्वेज इज समथिंग दैट इज की टू फाइंडिंग अ जॉब आफ्टर योर डिग्री. इसी तरह यूरोप में आपको परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलती तब तक जब तक आप उनकी लैंग्वेज और कल्चर को नहीं सीखते हो. सो या तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस कंट्री को टारगेट कर रहे हो और आप पाकिस्तान में ही स्टार्ट कर दो उस लैंग्वेज को सीखना. Try to get this certificate, language certificates, while being in Pakistan, while doing your education. So language is always an important additional skill you can grab. Multiple languages अगर आपको आती हैं तो that is very good thing. इसी तरह से लैंग्वेज सीखने का एक अच्छा फायदा ये होता है कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री जा रहे हो, लेट्स सपोज यू आर इन चाइना. सो चाइना और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ट्रेड है, बहुत ज्यादा बिजनेस है. सो पीपल आर ऑलवेज लुकिंग फॉर ट्रांसलेटर्स और समथिंग हु कैन बिकम bridge between the two countries. So if you know both the language and you know English as well, so you'll become that bridge, and you can use that to get the job. Mental health is very important. You need to focus on your mental health. You need to know how to manage your stress. जब आपको होम सिकनेस होती है और आप मैनेज नहीं कर पाते हो अपने इमोशनल हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को, बिकॉज हर चीज़ आपको खुद मैनेज करनी होती है. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर अबाउट दैट एज वेल. फाइनेंशियल वेलबींग, जब भी आप अब्रॉड आओ तो मेक श्योर कि यू प्लान फॉर योर फाइनेंसेस एंड प्लान फॉर योर फाइनेंशियल फ्रीडम. even if you are in Pakistan. There are opportunities जिनके थ्रू आप financial freedom attain कर सकते हो. That's a long story and we can arrange another session for that. But financial freedom is something कि आपके पास इतने पैसे आ जाएं कि आप रिटायर हो जाओ और आपको उसके बाद काम ना भी करना पड़े, तो यू स्टिल गेट दैट इनकम जो आपको सरवाइव करने के लिए इनफ हो. दिस इज फाइनेंशियल फ्रीडम. सो आपको उसे अभी से प्लान करना है कि आप अब से कितने सालों बाद फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन कर पाओगे और कैसे कर पाओगे. सो दिस इज समथिंग रियली इम्पोर्टेंट, स्पेशली व्हेन यू आर अब्रॉड. जब आप पैसे कमा रहे होते हो, सो यू नीड टू नो हाउ टू मैनेज फाइनेंस. Managing emotional health, it is very important to stay connected with your family, to make new friends at the new place where you are in, and getting married early if you are moving abroad. This is one of the things that can help you to adapt quickly to the new environment. If you have a partner, you have emotional support available. If you are alone, then you will feel more of that loneliness, and it will become problematic to adapt. So, what's the master plan to get the scholarship or move abroad? Dream, plan, and execute. Dream तो आपने कर लिया move करने के लिए, but you need to plan. You need to have a plan. You need to know the timeline कि आप किस टाइम क्या अचीव करोगे और कैसे पहुंचोगे वहां तक जो आप डिजायर कर रहे हो. And then execution. Stay consistent. Be confident while applying. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि एचईसी रैंकिंग या पाकिस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है वो शायद मैटर करती है. जो हाई रैंक इंस्टीट्यूट्स हैं सिर्फ उनके स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है. Foreign countries may, if you have done a degree from Nastolams or if you have done from a degree from a government university, they both are equal. They both are just Pakistani universities, HEC recognized universities, and that's it. There is no ranking that matters at the global level. So don't worry about that कि आपने बहुत महंगी यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं की. Be confident in your own skin. Be self-organized. अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस को ऑर्गेनाइज्ड वे में परस्यू करने की कोशिश करें. ट्राई टू क्रिएट फोल्डर्स जिसमें आप अपना रिकॉर्ड रखें कि आपने किस स्कॉलरशिप में
किस टाइमलाइन में अप्लाई करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किन प्रोफेसर्स को ईमेल कर चुके हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Be well informed. Uh, I always suggest students that if you are into scholarships or studying abroad, try to surround yourself with the right people. So on social media, try to find out the people who have already won those scholarships. Try to join those groups who are working on that scholarship, who are providing information on that scholarship or university or region. Um, and first step towards that is to finalize the region of your interest. So globally अगर हम scholarships या admissions के हवाले से देखें तो हम वर्ल्ड को तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज यूएसए, कनाडा एंड सऊदी अरेबिया. यहाँ की रिक्वायरमेंट्स प्रीटी मच सिमिलर हैं. यहाँ अप्लाई करने के लिए यूजुअली आपको जीआरई रिक्वायर्ड होता है और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के तौर पे आप टॉफल या आइल्स दे सकते हो. So GRE matters a lot. Score of GRE matters a lot in this region. If you have a good score, तो अगर आपका एकेडमिक प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं भी है, CGPA कम भी है, तो you can get a very good scholarship. Then comes the second region जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज का रीजन है, जिसमें यूरोप है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है. इस रीजन में अप्लाई करने के लिए आपको आइल्स चाहिए होता है. रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा वेटेज होती है. इसी तरह से वॉलंटियर स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज, इनकी बहुत ज़्यादा वेटेज होती है. ये रीजन क्वाइट competitive है, but it has a lot of funded positions, so you can target that region. और तीसरा रीजन जो है उसमें सारे एशियन कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग रशिया, चाइना, ताइवान, कोरिया, Japan, Turkey, Malaysia, Indonesia. This is the region which is comparatively less competitive. यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको आइल्स भी जनरली रिक्वायर्ड नहीं है. देर आर वेरी हाई नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल. और अगर आपका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बट competitive है, you can target this region to maximize your chances of getting a scholarship. So if you are getting a scholarship in a country, in an Asian country, and if you compare it with a person who is going on a self-financed degree, so I will always prefer the scholarship one. So अगर आपको scholarship मिल रही है और it doesn't matter कि किस country में है institute, if the institute has a good ranking in your subject area, this is more important than the country itself. अगर आपका रिसर्च ग्रुप अच्छा है, अगर आपके इंस्टीट्यूट की सब्जेक्ट बेस्ड रैंकिंग अच्छी है तो गो फॉर इट. कंट्रीज यूजुअली डजंट मैटर. If you want to stay updated about studying abroad opportunities or scholarships, you can follow me on LinkedIn. And always remember the future belongs to the competent. Get good, get better, be the best. So if you have any question, feel free to write in the chat. Thank you. Thank you so much, Fahad. You explained very, very well, and we are having a lot of questions popping in the chat box. And so here's a question of mine as well. Like I'm in my final year right now, bachelor's in food sciences and technology, and I'm pretty confused about the scholarship thing. That how like it's kind of overwhelming right now. Okay, what should I do and how to prepare? Is there any tips for me and other students as well, as there are many fellow? There are my fellows here as well who are in their final year or they have graduated yet. So if you have any tips for us, do let us know. Yeah. So towards the scholarship process and selecting the scholarship you are applying in, first step would be to decide कि आपको किस region में apply करना है. As I discussed, there are three different regions और उनके हर region का जो requirements हैं वो different है. So अगर आप ऐसा करोगे कि आप हर opportunity को देख रहे हो, हर scholarship को देख रहे हो और सोच रहे हो कि मैं इसमें भी apply कर लूँ, इसमें भी कर लूँ, तो क्योंकि रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, so you can't do everything at once. So if you do start with a focused approach, आपको क्लियर हो कि मुझे किस रीजन को टारगेट करना है, तो एटलीस्ट यू विल वर्क अराउंड ओनली दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स. और वंस यू कंप्लीट दोज रिक्वायरमेंट्स तो आप उस रीजन के किसी भी कंट्री को टारगेट कर पाओगे. सो द थिंग इज कि फर्स्ट सेल्फ इवेलुएट करना आपने अपने प्रोफाइल को और देखना है कि आप
कंपिटेंस के हवाले से और प्रोफाइल में जो चीज़ें कंपोनेंट्स हैं आपके पास और जो रिसोर्सेस हैं उनके हवाले से आप किस रीजन के लिए ज़्यादा सूटेबल हो, ताकि आपके जो चांसेस हैं स्कॉलरशिप अटेन करने के वो मैक्सिमाइज हो सके। फर्स्ट यू विल फिगर आउट द रीजन यू आर टारगेटिंग, देन यू विल सी कि उस रीजन में कौन से कंट्रीज में क्या क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। सो स्कॉलरशिप्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। फर्स्ट आर द गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, then second are the organizations, funding organizations based scholarships, जैसे इरास्मस मंडे सिक्स स्कॉलरशिप है जो कि इरास्मस एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर आती है। इसी तरह से फुल ब्राइट एक स्कॉलरशिप है जो फुल ब्राइट यूएससीएफपी के अंडर आती है। सो इसी तरह से डार्ट स्कॉलरशिप है। देन कम्स योर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जैसे चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, मलेशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, नेक्स्ट स्कॉलरशिप है जापान का जो कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। देन यू विल फिगर आउट कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कौन से हैं, देन ऑर्गेनाइजेशनल स्कॉलरशिप कौन से हैं, एंड देन कम्स रीजनल स्कॉलरशिप्स। जैसे चाइना में बहुत सारे स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अटेन करने में मुश्किल होती है क्योंकि अब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए। सो अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत competitive है, then you will come down to regional scholarships. रीजनल स्कॉलरशिप्स जो चाइना में है उनका नंबर बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे यूजुअली एक एप्लीकेशन फ़ी इन्वॉल्व होती है आपकी एप्लीकेशन पुट करने के लिए। सो अगर आपको थोड़ी सी फ़ी दे के आपके चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं टू गेट द स्कॉलरशिप, सो इट वॉन्ट हर्ट यू, सो यू कैन चूज दैट टू मैक्सिमाइज योर चांसेस। सो इस तरह से आप नैरो डाउन करोगे अपनी अपॉर्चुनिटीज को, एंड देन यू विल डिसाइड द स्कॉलरशिप्स यू आर अप्लाइंग। Okay, thank you so much, Fahad. I appreciate how you fantastically um, wind up all. And here is a question like, what hidden challenges did you face after moving abroad that people don't usually talk about? Hmm. So one of the challenges that I face, it's my personal story and journey. जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया तो I got several scholarships, fully funded scholarships in different countries, and I chose Australia as a destination because I always wanted to come to Australia. But when I came to Australia, my research group was uh, led by a Chinese, so it was a Chinese group. सो जब मैंने यहाँ पे पीएचडी स्टार्ट की तो मुझे फील हुआ कि यहाँ पे जो वर्क एथिक्स हैं उनके वो बहुत डिफरेंट हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स हैं उनसे। सो आई वाज फीलिंग लाइक आई एम डूइंग पीएचडी इन चाइना rather than Australia. But I worked hard to get that work-life balance and to be in that comfort zone that Australia provides. So I changed my research group, and then I went to an Australian professor and joined his group. I restarted my PhD. So this is kind of thing that you need to understand your rights when you are targeting a country. जहाँ पे आप हो एज अ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए आपके राइट्स क्या हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और वहाँ की नॉर्म्स क्या हैं। So if someone is deviating from the normal of the country where you are in, so you should raise your voice and change the things as you want. So there are many challenges associated with moving abroad. Um, ऑस्ट्रेलिया अगर आप आते हैं तो कल्चरल शॉक इज रियली समथिंग दैट अफेक्ट्स यू। आप बहुत लोनली फील करते हो। इट टेक्स टाइम टू डेवलप योर ओन सर्कल, योर ओन नेटवर्क, और इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, बट यू अडाप्ट विद टाइम। सो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। So here is another question. Sir, kindly give some tips on how to stay well informed. And did you face ICE? व्हाट इज आई सी? Yes. मुझे लगा कि शायद आपको भी पता होगा specific term like ICE. I think they messed up with the institute name. It's IEC, guys. It's Institute of Emerging Careers. Okay, so we'll take that question. Sir, kindly give tips on how to stay well informed. How to stay well informed? Yeah, that's what I suggested.
यू कि जब आपने अपना रीजन चूज कर लिया, अपने scholarships finalize कर लिए, then you will surround yourself with the people who are applying for that scholarship or who have already won that scholarship. आप क्या करोगे, आप फेसबुक पे जाओगे, if you are applying in Australia, so there are a lot of groups who are guiding about Australian scholarships in Australia, or student network in Australia, or Pakistanis in Australia. You will join those groups to get uh, latest information about what is happening in who is getting selected and why they are getting selected, what are the requirements, the people who have won the positions, why they have won. You will try to approach those people and get to know their stories, what they did differently to get those scholarships. सो सोशल मीडिया के थ्रू आप सराउंड करोगे अपने आप को उन लोगों के इर्द गिर्द जो आइदर विन कर चुके हैं या जो इस प्रोसेस में हैं अप्लाई करने के. सो यू विल बी अपडेटेड विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इन दैट वे. इसी तरह से आप यूट्यूब पे वो चैनल्स ज्वाइन कर सकते हो जो उस कंट्री की स्कॉलरशिप को डील कर रहे होंगे, उस पे वीडियोस बना रहे होंगे. So there are a lot of people who are working this way to spread awareness among the students for particular scholarships. So आप उन सब से कनेक्ट कर सकते हो, उनसे इंफॉर्मेशन और अपडेट रह सकते हो. So this is the right way to stay updated. So here is a question. What type of skills we should have to learn before going abroad? It can be household skills as well. Yeah, so you should know how to cook your meals. Cooking is something that you would need to do right away, and you need to do yourself. Because यहाँ पे आपको कोई भी इस तरह की सर्विसेज नहीं मिलती, मेड्स नहीं मिलती और सर्वेंट्स नहीं मिलते. So you need to do everything yourself: house cleaning, cooking, managing your finances. Managing your finances is one of the things that is really important, जो स्किल हमारे स्टूडेंट्स को सिखाया नहीं जाता. और यहाँ आके आप यूजुअली मिसमैनेज करते हो अपने फाइनेंसेस को, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम हो सकती है. सो इफ यू आर अब्रॉड, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है टू अटेन फाइनेंशियल फ्रीडम, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से आपको पैसिव इनकम आ सकती है. लाइक you can stay updated about the stock market, you can know the cryptocurrency market, you can know the real estate market, you can get into business. So there are many opportunities that can generate passive income for you. So the earlier you start, the better the outcome will be. So financial planning is the key. Uh, बाकी सारी चीजें तो मैनेज हो ही जाती हैं, खाना नहीं भी बनाओगे तो बाहर से भी खा सकते हो. But finances is something that you need to learn. आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, try to stay updated with what is happening in the financial world, and try to know कि आपका investment plan क्या होगा once you get abroad, or once you are starting to make money. ओके, थैंक यू सो मच फहद. एंड आई एग्री विद यू कि पाकिस्तान में बहुत स्टूडेंट को फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है, हम बहुत बहुत कम बच्चे जो हैं इसके ऊपर तवज्जो देते हैं. और ये बहुत ज़्यादा लाइफ सेविंग स्किल है. बच्चों को लाइक 18 ईयर्स या 15 ईयर्स से ही पता होना चाहिए कि हाउ टू सेव मनी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन एंड हाउ टू अर्न मनी, लाइक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम. इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा जो है हम लोगों को अवेयरनेस यहाँ पर ज़रूरी है. So thank you so much for your time and efforts, and it was a great session. I personally learned a lot, and the comments are like so good that they have learned a lot, and बहुत interesting लगी उनको आपकी भी story, and inshallah we'll stay connected on LinkedIn as well. So yes, thank you so much for your time. Thank you Thank you so much, so much, Mohan, for everyone. thank you so much for Bye. reconsidering our request again. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. All of the participants here, please, fill the attendance form before you guys leave.
And our courses are open. Since you guys saw, there were two speakers from Institute of Emerging Careers today. The first one, Ijaz, and Mohammed Sami. You guys learned from the story. So please, I would appreciate that there is some sort of format at IC. You guys can join and enroll. The applications are exclusively open for the participants of Digital Architect Conference. Thank you so much, everyone. See you at 7:30 now. That's last session for today, and it's like from a neuroscientist. You guys gonna love it. It's a brain game session. Okay, love this. Allah Hafiz. I would appreciate the moderators to stay here.